Hello friends. So 10.2 exercise 1 to 7, 9, 10 and I think 14 भी था. ठीक है, तो चलो लास्ट में जितने भी सम सोल्व किए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर विद दी नंबर 13, 12 and 13. 12 and 13 both the sum same method. Okay, but 13 easy, 12 also easy, बट 13 में आपको समझ में जल्दी आ जाएगा. सेम में आपको हमें 12 में करना. ठीक है, तो नंबर 30 इज क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. व्हिच टाइप ऑफ इक्वेशन? तो द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 and cutting of intercept on the axis whose sum is 9. So in this sum, there is an intercept word or not? An intercept word means both the intercept. So both the intercept type, what is the equation of line formula? X by A plus Y by B equal to 1, where A and B are X intercept and Y intercept respectively. So here, equation of line. Equation of line is x by a plus y by b equal to 1. Mark this is a equation 1 where a and b are equation number, intercept a, x intercept and y intercept. A and b are x intercept and y intercept. कभी भी क्वेश्चन में इंटरसेप्ट वर्ड हो, इंटरसेप्ट या क्वेश्चन इज अबाउट इंटरसेप्ट, देन ऑलवेज स्टार्ट विद द x by a plus y by b equal to 1. मीन्स दिस इज द इक्वेशन, ये हमें फाइंड करना है. इन दिस अननोन डेटा a and b, it means our target is a and b. So we need a and b. After completing a and b, then we will put the value of a and b in equation number 1 and solving this and answer ready. Sum is about intercept. So start with the x by a plus y by b equal to 1. Use the data of the question. Find a and b. After completing a and b, put the value of a and b and then solve. This is your answer. Now to get the value of a and b, here in our question there are two data are given. One data is passing through the point 2 2 and cutting of intercept on the axis whose sum is 9. So intercept sum is 9. Okay. So here sum of the intercept is 9. So a plus b equal to 9 is our second. So अगर हमें our target is a and b, this is a one equation a b type. अगर हमें कोई दूसरा भी इक्वेशन मिल जाता है a b type तो हमारा काम हो गया. Okay, so what is the second data? One data is sum is 9, so sum is 9. Sum of the intercepts are a and b, so a plus b equal to 9. And what is the second data? The second data, equation of the line passing through the point 2 2. So what is the line? This is a line or not? Okay, so write line passing through the point 2 2. It means where is 2 2? कभी भी ऐसा लिखा है कि लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 मीन्स वेर इज 2 2 ऑन दी लाइन. बराबर, लाइन पासिंग थ्रू याद करो, हमने जब ये कंसेप्ट किए थे तब हमने बोला था कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स आर ऑन द लाइन. तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, देन वी कैन यूज दिस पॉइंट इन द इक्वेशन. इट मीन्स वी कैन पुट दिस पॉइंट इन द इक्वेशन इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई. लाइक एक एग्जाम्पल, like x plus y plus 2 equal to 0 and हमें चेक करना है बराबर कि 3 minus 3 and 1 is on this line or not. अभी तो हमने ये ले लिया है, चलो, बट चेक करना है कि -3 and 1 is on the line or not. How to check? So first put this point in place of x and y in left side, and by putting this point, if answer is a right side means 0, so we can
right? This point is on the line, otherwise not. So x equal to put -3 to -3 and y equal to +1 and +2. Chalo, what is the calculation? 2 + 1 3, 3 - 3 0. Okay, equal to 0, it means right side. Okay, so this point satisfies the equation. It means point is on the line. But here completely given ki line passing through the point, it means line passing through the point, it means point is on the line. Point is already on the line. So if your point is on the line, then we can put this point in the equation of line in place of x and y. So now put this point in the equation in place of x and y. So x is a 2, y is a 2. Therefore 2 by a plus 2 by b equal to 1. Now solving this. Both the coordinate 2, 2. So 2 by a plus 2 by b equal to 1. ए बी इज एलसीएम, अदरवाइज चलो कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है. दिस इज द इक्वेशन 3. नाउ सॉल्विंग 2 and 3, तो हमें क्या मिल जाएगा? दिस इक्वेशन इज ए बी टाइप, दिस इज ऑल्सो ए बी टाइप. तो इफ वी सोल्व टू इक्वेशंस, ए बी टाइप इक्वेशंस, देन इजीली हमें ए एंड बी मिल जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 9 - a इन इक्वेशन नंबर 3. Either putting b equal to 9 - a or putting a equal to 9 - b in equation 3. So putting b equal to 9 - a in equation number 3. So 2 by a as it is plus 2 by b. What is b? 9 - a. And equal to 1. LCM and other side. चलो तो LCM क्या होगा हमारा? A and 9 - a LCM and cross multiplication. तो 2 into 9 - a plus 2a equal to LCM other side multiply. तो other side a into 9 minus a. Okay. Now multiply. तो 2 into 9 minus है तो 18 minus 2a. 18 minus 2a plus 2a. बराबर 18 minus 2a plus 2a equal to 9a minus a square. टू ए कैंसल. टेकिंग अदर साइड तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0. बराबर ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0. योर प्रोडक्ट इज 18 एंड एडिशन इज 9. 6 3 are 18 and 6 plus 3 9. So a minus 6 and a minus 3 equal to 0. So a equal to 6 or a equal to 3. Now if a equal to 6, use equation 2 and find b. A equal to 6, so b equal to 3. And a equal to 3, तो b equal to 6. तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे. होगा तो कन्वर्टिंग इनटू टू पार्ट्स. चलो a6 and b3. हाँ पुट इन द इक्वेशन एंड ओवर. अब इक्वेशन क्या होगा? x by 6 plus y by 3 equal to 1. 6 and 3 तो obviously 6 LCM. तो here x and here 6 LCM तो 2 multiply तो 2y and LCM other side multiply तो answer x plus 2y minus 6 equal to 0. And now this case solving a equal to 3 and b equal to 6 तो x by 3 plus y by 6 equal to 1. Again 6 LCM. Here 3 तो multiplying 2 तो 2x plus y and equal to 6. So answer 2x plus y minus 6 equal to 0. चलो एक और सम हो जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको. ये रिपीट नहीं करना है. बराबर. Find the equation of line that cuts off equal intercept on the axis. It means intercepts are same and passes through the point 2 3. चलो तो स्टार्ट कैसे करें? सम इज अबाउट इंटरसेप्ट. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by a
plus y by b equal to 1. Here we need a and b, and to get a and b we need two equations. Okay, तो first equation क्या होगा? तो कि line intercepts are equal. So intercepts are equal, so a equal to b. A and b are intercept, so a equal to b, and line passes through the point 2, 3. So we can put this 2, 3 in the equation. So 2 by a plus 3 by b equal to 1. 2 by a plus 3 by b equal to 1. This is the equation number 3. Now put 2 in the 3. A equal to b, putting here. And this equation continue. 2 by a equal to b. 3 by b equal to 1. And right here from equation 2. Equation 2 में सर ने क्या किया? A equal to b यहाँ पर put up किया. Okay? 2 by b plus 3 by b. 5 by b. So b equal to 5. And b, a and b same. So if b 5, so a also 5. Therefore, equation of line is given by x by 5 plus y by 5 equal to 1. So answer x plus y equal to 5. So x plus y minus 5 equal to 0. एक और more two equations we can find here, but आपके सिलेबस में वो सब कुछ नहीं है, बराबर? पीछे कोई आंसर में नहीं लिखा है, ठीक है? तो this is the our final answer, x plus y minus 5 equal to 0. Okay, तो two sums over 12 and 13. Next number 18. 12, 13 and 12, 13 type. Let's start question number 18. PAB is the midpoint of a line segment between axes, so that equation of the line is x by a plus y by b equal to 2. चलो तो ये this question pattern is not like question 12 and 13. तो PAB is the midpoint of a line segment and line segment between the axes. ऐसा डायग्राम था कोई? Between the axes one line segment. Yes, कहां पर था वो? Intercept में. बस तो this sum is also about intercept. X and y axis. And this is the line segment between the axes. So PAB is the midpoint of a line segment. This point is A and this point is B. So find the equation of this line. It means prove that equation of this line is x by a plus y by b equal to 2. चलो हमें A and B point find करने हैं. If midpoint AB, then what is A and what is B? Directly we can decide. One thing fixed कि A is on x axis तो y coordinate 0 and B is on y axis तो x coordinate 0. And how to find the midpoint? Addition of x divided by 2. So midpoint of AB is a PAB. Okay? So decide yourself x coordinate and then check the midpoint of x coordinate is A. So 0 plus dash 0 plus dash by 2 equal to A. Then this dash equal to what? 2A. करो चेक. 2A plus 0 2A. 2A by 2 A. नाउ B मिलना चाहिए आपको. y कोऑर्डिनेट एडिशन बाय 2 आपको आंसर B मिलना चाहिए. तो यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2B. अंडरस्टूड? चलो पॉइंट रेडी. नाउ एक पॉइंट याद करो. You know very well about that point. This point is 2A0
then x intercept is 2a. याद करो, if this point is a0 तो x intercept is a, point is c0 तो x intercept c, point d0 तो x intercept d, same 0a 0b 0c 0d, तो this is called y intercept. Okay, so now here x coordinate is 2a, so 2a is called x intercept, and here y coordinate is 2b, so 2b is a y intercept. Now how to write x intercept and y intercept? तो आपको मिल गया. ओके, तो here PAB is the midpoint of line segment AB between the axes. So what is A and what is B? So A is 2A, 0 and B is 0, 2B. Therefore x intercept equal to 2A and y intercept equal to 2B. If your x intercept and y intercept are a and b, then equation x by a plus y by b equal to 1. But if x intercept and y intercepts are 2a and 2b, then x by 2a plus y by 2b equal to 1. So equation of line is given by x by 2a plus y by 2b equal to 1. अब ऐसा कोई इक्वेशन लिखो तो आप क्या बोलते हो? x by a plus y by b equal to 1, where a and b are x and y intercept. So here x and y intercepts are 2a and 2b. So here 2a and 2b. Now 1 by 2 common and other side, to answer x by a plus y by b equal to 2. And here your proof is ready. Equation over. Done? चलो 20 is different. कोई intercept नहीं है. But by using the concept of a line, prove that these 3 points are collinear. But by using concept of line, not distance formula, not slope. You know very well about how to prove 3 points are collinear by using the distance formula. So addition of any two equal to third, AB plus BC equal to AC type. And how to prove 3 points are collinear by using the slope. So slope of AB equal to slope of BC equal to slope of AC. But here prove these 3 points are collinear by using the concept of line. चलो तो आपकी मेथड क्या होगी by using line? Method is, हम क्या करेंगे? 1, 2 and 3. Out of these 3 points, by using any two points, we will find the equation. By using any 2 point, we will find the equation. And if suppose कि चलो by using these two हमने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया, then बाद में क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट satisfies the equation or not. If third point satisfy, तो थर्ड पॉइंट भी कहां पर होगा? ऑन दी लाइन. एंड थर्ड पॉइंट वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो थर्ड पॉइंट वो लाइन पर नहीं होगा, तो नॉट कोलिनियर. Find equation by using any 2 points. After completing your equation, then put third point in the equation. If satisfy, the point is on the line. Does not satisfy, the point not on the line. If third point satisfy, the point on the line, the points are collinear. Third point does not satisfy, the point not on the line, points are not collinear. Done? This is your method. Now finding the equation of line by using any 2 points. Okay, equation of line. Passing through any 2 point. 3 में से कोई 2 पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? 3, 0 and -2, -2. चलो, passing through 2 point. How to find the equation? First point, x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1. तो x minus x1 is a 3 upon x2
minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1. Okay. So x minus 3 upon minus 5 equal to y upon minus 2. Minus minus cancel. 2 this side multiply and 5 other side multiply. So 2x minus 6. 2x minus 6 equal to 5y. So 2x minus 5y minus 6 equal to 0. Now putting third point in the equation, so putting 8 2 in the equation of line. Therefore, by putting in only left side of, so 8 2 into 8 minus 5 into 2 and minus 6 equal to 16 minus 10 minus 6 equal to 0. So 8 2 is on same line. Therefore 3 0 minus 2 and 8 2 are collinear. थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर. डन. चलो नाउ बीच में 2-3 सम है, उसके लिए हमें डिवीजन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. बराबर. जैसे आपको मिड पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिवीजन फॉर्मूला भी 10th में थी. बट आप जो 10th में डिवीजन फॉर्मूला का यूज कर रहे थे वो अगर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बराबर. एक चेंज हुआ यहां पर. आपकी फॉर्मूला ये नहीं थी, शायद कुछ m एंड n वाली फॉर्मूला थी कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. बराबर. तो यहां पर आपको क्या करना है, न्यू फॉर्मूला लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 एंड लेमड़ा y2 प्लस y1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1. वन मोर टाइम, लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 and y coordinate lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1 where lambda is a ratio. lambda is a ratio क्वेश्चन में होगा वो. एंड क्वेश्चन में एक और भी होगा कि पूरा क्वेश्चन क्या होगा, p divides ab from a side और p divides ab from b side. तो अगर a साइड लिखा है तो 2 पॉइंट भी होंगे ऊपर, तो a x1 y1 and b x2 y2. एंड अगर b साइड लिखा है तो b x1 y1 and a x2 y2. ऐसा आपको सपोज करना है. ठीक है. वन मोर टाइम, जस्ट रिमेंबर 3 points. One is a formula, a side and b side. What is the formula? Lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1, lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1. This is your formula. And a side तो a x1 y1 and b x2 y2, and b side तो b x1 y1 and a x2 y2. जो भी साइड है वो x1 y1 होगा, अदर पॉइंट x2 y2. ओके. बस अभी यूज करेंगे तो पता चल जाएगा. ठीक है. बाकी तो डिवीजन फॉर्मूला आपने 10th में की हुई है. ठीक है. डन. चलो तो नाउ 18 and 22 sums over and 1 not. Okay. Hello. Next number 19 and 11. First 11 and then 19. बराबर. Number 11 is one line is perpendicular to the line segment. And line segment made by the 2 points 1 0 and 2 3. चलो पहले इतना एक डायग्राम बनाते हैं. This one is a line segment. Suppose name is A and B. A point 1 0, B point 2 3. One line is perpendicular to this line segment. Not exactly middle one. यहां पर कोई मिड पॉइंट ऐसा कोई वर्ड नहीं है. One line is perpendicular to line segment, divides it in the ratio 1:n.
this distance is 1 and this distance is n, not same. अगर ये दोनों पार्ट सेम नहीं है तो ये मिडल में नहीं है लाइन. ओके, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ओके, चलो जो पहले एक समझ लो कि हमें करना क्या है, बाद में प्रोसेस जरूर. We need the equation of this line, and this line is perpendicular to line segment AB. बराबर? And this line divides this line segment in the ratio 1:n. And this line is perpendicular to AB. चलो परपेंडिकुलर है तो एक वन थिंग फिक्स कि हमें स्लोप तो मिल जाएगा. हाउ टू फाइंड द स्लोप? तो कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ AB? Slope of AB possible or not? Yes, because A and B points are non-point. So slope of AB possible. So if slope of AB possible, so by using the perpendicular condition, can we find the slope of the perpendicular line? Yes. So याद करो. Two lines are perpendicular to each other. One slope is 3/2. So another line slope -2/3. 3/2 opposite 2/3 and plus 2 minus. बराबर? This is the process for the perpendicular condition to find the value of slope. Okay, चलो slope मिल गया. Now we need equation of this line. तो on this line we need points. मैंने आपको पहले भी बोला था कि चलो इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट्स तो है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला पुट अप कर दें, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, वो नहीं. आपको ये इक्वेशन लाइन फाइंड करनी है, दिस लाइन इक्वेशन. तो वी नीड ऑल दी पॉइंट्स, ऑल दी स्लोप फॉर दिस लाइन. ये लाइन पर कोई भी डेटा नहीं है. On this line we don't know about any data. Okay, चलो तो slope of AB we can find. So by using this slope we can also find the slope of the perpendicular line. तो इसका perpendicular line का slope आपको मिल जाएगा. Okay, अभी क्या प्रॉब्लम है कि only slope से इक्वेशन नहीं मिलेगा. Slope point formula, तो we need point also. Okay, तो अभी जो हमने एक नोट लिखी थी और डिवीजन फॉर्मूला, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड जो ये पॉइंट है ये पॉइंट, दिस पॉइंट, सपोज दिस इज पी. तो पी डिवाइड्स ए बी और नॉट. तो बाय यूजिंग द डिवीजन फॉर्मूला वी कैन फाइंड पी. वेयर इज पी? पी कहां पर है? सपोज दिस पॉइंट इज पी. तो वेयर इज पी? पी इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन बोथ. बट हमें तो वर्टिकल लाइन में भी पॉइंट चाहिए, तो वर्टिकल लाइन में पॉइंट आपको मिल गया. ऑन दिस लाइन दिस इज द पॉइंट. तो इसका स्लोप मिल गया एंड पॉइंट ओवर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन रेडी. ओके, तो हाउ टू फाइंड स्लोप? बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर कंडीशन. एंड हाउ टू फाइंड पॉइंट? बाय यूजिंग द डिवीजन फॉर्मूला. ओके, चलो तो फर्स्ट वन वी नीड पॉइंट. पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट पी. एंड सपोज दिस लाइन इज एल. तो एल is perpendicular to AB, वो तो बाद में यूज करना है. बट लाइन L divides AB, but line L तो ठीक है, but on the line L there is a P point or not? Okay, तो point P divides line segment AB. now यहां पर A साइड और B साइड नहीं है तो हम A साइड ले लेते हैं कि सपोज फ्रॉम A साइड in the ratio 1:n. A साइड से आप क्या बोलोगे? 1/n, 1:n. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1, lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1. now use your note from A side. तो A is our x1 y1 and B is our x2 y2. okay, हमने यहां पर क्या लिया है? A साइड. तो A x1 y1 and B x2 y2 and lambda is a 1/n. lambda is a ratio is 1/n. तो lambda means 1/n. lambda into x2. तो x1 y1 x2 is a 2 plus x1 is a 1 upon lambda plus 1 means 1/n plus 1 comma lambda y2 x1 y1 x2 y2. y2 is 3 plus y1 x1 and y1 is 0 upon 1/n plus 1. therefore point P is, now every time n LCM and cut, n LCM both the side and then n cancel.
तो n here multiply, तो here 2 into 1 2, 2 plus n upon 1 plus n, comma, n here multiply तो 0, तो only 3 left upon 1 plus n. our ratio is in n form, तो पॉइंट आपको n फॉर्म में मिला, तो इक्वेशन भी n फॉर्म में होगा. चलो पॉइंट रेडी. नाउ स्लोप, तो our line L is perpendicular to AB. Slope of AB equal to slope of AB, difference of y upon difference of x. 3 minus 0 is a 3 by 2 minus 1 is a 1 equal to 3. Therefore, slope of L minus 1 by 3. Opposite of 3 is a 1 by 3 and change the sign, minus 1 by 3. So, we need the equation of L. On L, P point and slope of L is a minus 1 by 3. Slope point formula. So, equation of line is given by equation of line is given by y minus y1. What is your point? This is the point and this is the slope. So this is the point. x1 and y1. So 3 upon 1 plus n. So y minus y1. y1 is a 3 upon 1 plus n. ये वाला y1 यूज नहीं करना है, ये तो डिवीजन फॉर्मूला के लिए y1 था. हमें तो स्लोप पॉइंट में दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द स्लोप, तो x1 y1 एंड स्लोप m. तो y minus y1 equal to m. m is a minus 1 by 3 and x minus x1 2 plus n upon 1 plus n. Okay? So both the side 1 plus n LCM and cut. So y into 1 plus n minus 3 upon 1 plus n equal to minus 1 by 3 bracket x into 1 plus n minus bracket 2 plus n upon LCM 1 plus n. Now 1 plus n cut. 3 multiply and minus sign with the bracket multiply. So 3 multiply to 3y 1 plus n minus 9 equal to minus sign multiply to minus x into 1 plus n and minus minus plus 2 plus n. So how to arrange the equation? First x, then y, then constant. So x term is a negative, taking other side. So 1 plus n x plus 3 into 1 plus n y minus 9 as it is, and 2 plus n both positive, other side both becomes negative. So the final answer 1 plus n into x plus 3 into 1 plus n into y minus n and minus 9 minus 2 minus 11 and equal to 0. And at last take the minus sign common, to bracket n plus 11. So ax plus by plus c equal to 0 is the answer. Okay. So this is the sum number 11. So next number 19. Point RHK divides a line segment between the axis. So again between the axis वाला sum. Between the axis means right angle shape diagram x y and line. तो फिर से वो intercept वाला आएगा. हाँ. In the ratio 1:2, then find the equation of line. Okay. First making the diagram. Point RHK divides a line segment. The line segment is between the axes. A and B. So point RHK is not exactly middle one, because RHK divides the line segment AB in the ratio 1:2.
this distance is 1 and this distance is 2. So R is not the middle point. Then find the equation of this line. Okay? चलो A we know that कि A0 क्योंकि जो अगर मिड पॉइंट है तो हम फाइंड कर लेते हैं. जो पहले वाले सम में हमने किया था by using the midpoint we can find the A and B, but if this is not midpoint so we can directly not find the value of A and B. Done? चलो our target A and B. A is a x intercept, B is a y intercept. अगर हमें x intercept and y intercept मिल गया then we can find the equation of line x by a plus y by b equal to 1. Okay? चलो तो in this diagram RHK divides line segment AB. Here also from A side in the ratio. A side से रेशियो क्या होगा 1:1:2. Therefore यहां पर क्या था P डिवाइड्स ने तो here P point and AB line segment AB तो A is x1 y1 B is x2 y2. तो here R is a dividing point तो here write the RHK equal to now AB ने तो A is a side तो A is x1 y1 and B is x2 y2. Done? And lambda is a 1/2 तो 1/2 lambda x2 x1 y1 x2 is a 0 plus x1 is a upon lambda plus 1 1/2 plus 1 again 1/2 lambda y2 x1 y1 x2 y2 is a b plus y1 x1 y1 is a 0 upon 1/2 plus 1. So this is RHK equal to 2 LCM and cut 2 here multiply so this is 0 plus 2a is a 2a by 2 plus 1 3 and b plus 0 तो b by 3. चलो हमें a and b फाइंड करना है तो by comparison we can find the a and b. तो 2a by 3 equal to h 2a by 3 equal to h and b by 3 equal to k. Therefore 2a equal to 3h. So a equal to 3h by 2 b equal to 3k. So equation of line x by a, what is a? 3h by 2 y by b, what is b? 3k and equal to 1. 2 offside multiply 2x by 3h plus y by 3k and equal to 1. This is answer. Otherwise 3 common and other side multiply तो 2x by h plus y by k equal to 3. ये भी आंसर हो सकता है. Done? चलो तो दिस इज योर 19 and 11. ओके तो एक कैलकुलेशन करते हैं कि कौन कौन से सम अभी बाकी है. आई थिंक 1 to 7 ओवर मेरे हाथ में जो है वो टेक्स्ट बुक है बराबर. तो आप भी अपने पास टेक्स्ट बुक रखो. 1 to 7 ओवर 8 लेफ्ट एक 8 बाकी बराबर. 9 10 ओवर 11 ओवर 12 13 ओवर 14 ओवर बराबर. 8 एक ही बाकी है. 9 ओवर 10 ओवर 11 ओवर 12 ओवर 13 ओवर 14 ओवर एक 15 बाकी. 9 15 16 17 एंड 18 पिछले वाले में था 19 and 20 ओवर. इट मीन्स 9 15 16 17 4 sums left and 2 illustrations. So this part will be over. Okay? चलो तो we will solve these 6 sums in our next lecture. Okay? चलो.